यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर विच आप सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में असी करांगे PSEB क्लास 12th जनरल इंग्लिश का मॉडल टैसट पेपर जिहड़ी कि तुहाडी 27 फरवरी को परीक्षा होनी है। असी उसका मॉडल टैसट पेपर इस वीडियो में हल करांगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के होर वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। आओ शुरू करते हैं। 3 घंटे का समय 80 अंकों की परीक्षा। सब तो पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो ब्रेन ड्रेन वाला पैरा है। तो पॉज करके आप सारे विद्यार्थी इस पैरे को चंगी तरह पढ़ सकते हो। फिर असी प्रश्न उत्तर स्टार्ट करांगे। तो आओ हुण असी स्टार्ट करते क्वेश्चन आंसरस। तो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। द टर्म ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो रेफर टू एज ऑप्शंस एंड कैपिटल फ्लाइट, ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, पुल फैक्टर्स या पुश फैक्टर्स। इसका उत्तर है ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। सेकंड क्वेश्चन है ब्रेन ड्रेन हैज टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑप्शंस एंड सेंडिंग कंट्रीज, रिसीविंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसका उत्तर है सेंडिंग कंट्रीज। इस तो बाद है विच टर्म रेफर्स टू एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, ऑप्शंस एंड ब्रेन ड्रेन, कॉन्फ्लिक्ट्स, पुल फैक्टर्स या पुश फैक्टर्स। इसका उत्तर है ब्रेन ड्रेन। तो इस तो बाद है पुश फैक्टर्स इंक्लूड ऑप्शंस एंड लो वेजेस, लैक ऑफ सैटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है बोथ ए एंड बी। इस तो बाद है पुल फैक्टर्स इंक्लूड ऑप्शंस एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, कैपिटल फ्लाइट, सेंडिंग कंट्रीज या नन। तो इसका उत्तर है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। इस तो बाद ब्रेन ड्रेन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ऑप्शंस एंड सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, लाइफस्टाइल या वेल्थ क्रिएशन। तो इसका उत्तर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन। तो इसके उत्तर में जैसे लिख सकते हैं इट इज़ अ नेम गिवन टू द एक्टिविटी ऑफ स्किल्ड पीपल ऑफ अ कंट्री माइग्रेटिंग टू अ फॉरेन कंट्री फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुमरेट द पुश फैक्टर्स दैट लीड टू ब्रेन ड्रेन। तो इसका उत्तर है लो वेजेस एंड लैक ऑफ सैटिस्फैक्टरी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस। इस तो बाद फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज एवरी सिटीजन मस्ट डैश फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन होल हार्टेडली। तो इतने असी पढ़ना कॉन्ट्रीब्यूट। इस तो बाद हु आर टेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, एंटरप्रेन्योर्स। इस तो बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हैल्थ एंड हाइजीन वाला जो पैसेज है तो तुम इसनों चंगी तरह पढ़ सकते हो। तो फिर असी क्वेश्चन आंसरस नू स्टार्ट करांगे। तो पॉज करके पढ़ लो पैरे नू, फिर असी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसरस। तो हुण असी शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसरस। हाइजीन रेफर्स टू प्रैक्टिसेस दैट लीड टू गुड हेल्थ थ्रू ऑप्शंस एंड बैलेंस डाइट, इम्प्योर एयर, एबंडेंट वेल्थ या रेगुलर प्ले। तो इसका उत्तर है बैलेंस डाइट। सेकंड, लाइफ विल बिकम वर्थलेस थ्रू ऑप्शंस एंड गैमलिंग एंड ड्रिंकिंग, रेगुलेटेड लाइफ, प्योर माइंड या हेल्दी बॉडी। तो इसका आंसर है गैमलिंग एंड ड्रिंकिंग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म हेल्थ रेफर टू। तो इसका आंसर है इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ साउंड माइंड एंड फिजिकली फिट बॉडी फ्री फ्रॉम एनी सिकनेस और डिसऑर्डर। इस तो बाद है कैन अ वेल्दी बट अनहेल्दी मैन एंजॉय लाइफ, नो। Fill in the word with suitable word from the passage. The selection in army service is made purely on। तो इसका उत्तर है हेल्थ। इस तो बाद मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम में विद देयर एंटोनिम्स अंडर बी। एंटोनिम्स होंगे ऑपोजिट मीनिंग। फ्रेश द ऑपोजिट हो गया स्टेल, तो प्रिजर्व द एंटोनिम हो गया डिस्ट्रॉय। इस तो बाद है ग्रामर। तो प्रैसी है तुसी आप ही अपने शब्दों में लिखनी है। बस इस गल का ध्यान रखना कि प्रैसी में ना वर्ड्स है वो एक्सीड नहीं होने चाहिए। इस विद्यार्थी की गलती करते हैं कि वर्ड लिमिट को एक्सीड कर देंगे हैं तो 1/3 शब्दों में तुसी प्रैसी लिखनी है। इस तो बाद है अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इमेजिन यू आर हिमालय, राइट अ लेटर टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट मेकिंग आउट अ केस फॉर द ओपनिंग ऑफ अ डिस्पेंसरी इन योर एरिया। तो लेटर सॉल्व करके आप सारे की स्क्रीन के सामने लिखी हुई आ रही है। तो आप सारे विद्यार्थी लैटर का फॉर्मेट देख सकते हो कि किस तरह से लैटर लिखनी है। तो सारा कुछ लैफ्ट में होना चाहिए, इस गल का तुम ध्यान रखना है। तो लैटर में तुम पॉज करके पढ़ भी सकते हो तो इसका फॉर्मेट भी देख सकते हो। तो इस तो बाद दूजी एप्लीकेशन तो वह भी तुम देख सकते हो कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखी है सॉल्व करके। जो कि टॉपिक है तो किस तरह से लिखी है वो भी सॉल्व की हुई हल की हुई आप सारे की स्क्रीन के सामने आ रही है। तो आप सारे विद्यार्थी इसनों भी चंगी तरह देख सकते हो। तो हुण असी करते हैं न्यूज़पेपर हैडलाइनस। पैनल टू फ्रेम डीजल रूल फॉर ट्रैक्टर्स से इसमें एक्सप्लेन करके असी लिखे द ऑयल मिनिस्ट्री है सैटअप हाई लैवल पैनल टू हेल्प फ्रेम फ्यूल इकोनॉमी रूल्स फॉर ट्रैक्टर्स टू मॉडरेट देयर डीजल कंजप्शन। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 7.7% ऑफ इंडियाज एनुअल डीजल यूज़। इस तो बाद ईमेल टू योर न्यू एम्प्लॉयर थैंकिंग फॉर द इंटरव्यू। तो ईमेल का फॉर्मेट तुम देख सकते हो, पहला टू फिर डेट फिर @CCBCC ब्लैंक छड्डना है सब्जैक्ट। तो उस तो बाद सर, तो उस तो बाद तुसी मैटर लिखना है। तो उस तो बाद एंड में तुसी थैंक यू करना। इस तो बाद ट्रांसलेशन एनी टू, कोई भी 2 वाक्यों की ट्रांसलेशन करनी है। आई हैव नॉट
tried to convince her, मैं उसਨੂੰ मनाने की कोशिश नहीं की है. Her grandmother had not been eating since morning. उसके दादी जी सवेर तो खाना नहीं खा रहे हैं. Obey your teacher, अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करो. इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इंग्लिश. कि मनजीत ईमानदार है. इज मनजीत ऑनेस्ट. ਅਸੀਂ सड़क के नियमों का पालन करते हैं. वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स. उसने चाह पी ली है. ही हैज़ टेकन टी. इसके बाद डिटर्मिनर्स. ही ऑलवेज कीप्स डैश मनी इन वॉलेट फॉर एमरजेंसीज. इस विच असी पढ़ना है सम. आई गेट अप अर्ली इन डैश मॉर्निंग. द मॉर्निंग आई कवर्ड डैश फेस्ट एंड वेप्ट माई. इस तो बाद है जेरन. ही इज़ क्रेजी अबाउट सिंगिंग. इस तो बाद है इन्फिनेटिव. आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स. इस तो बाद है री राइट द सेंटेंसेज आफ्टर रिमूविंग टू. ही इज़ too happy to tell. He तो इसका हो जाएगा he is so happy that he cannot tell. Change the degree of comparison. Bullet trains run faster than meal trains. Meal trains do not run as fast as the bullet trains. This to other change in the voice. Arjun sees a deer. A deer is seen by Arjun. Had you taken the tea? Had tea been taken by you? This to other change into indirect speech. He said to me, shall we ever meet again? He wondered if we would ever meet again. This to other literature. According to Hassan, who were nerds, they 1 mark वाले questions ने पहला. ते इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू हसन हार्ड वर्कर्स वर नर्ड्स. नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर द मार्च किंग. कैथरीन लिटिल बेकलेस. इस तो बाद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज टू एक्नॉलेज एंड सर्विस. ट्रू और फॉल्स से ट्रू है. तो इस तो बाद लूसिया वाज सफरिंग फ्रॉम. तो इसका उत्तर है ट्यूबरक्लोसिस. What was Dr. Bernard's father's attitude towards life? He believed that God tests man through suffering. इसके बाद who was the head girl in Miss Beam's school? Millie. Who was General's cook? Proher. Dash is the writer of the gold frame. R.K. Lakshman. Kalan Khan was the dentist. True. Where were Kayanam Singh and Man Singh posted? They were posted at Burma front. This to the stanzas for comprehension. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent the undergrowth, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. Name the poem and the poet. The poem is the Road Not Taken. Poet Robert Frost. Rhyme scheme of the first 4 lines of the given stanza. The first 4 lines से आखिरी शब्द ने would, both, stood, could. ते would हो जाएगा A, both B. ते stood ते could. ते A. ते rhyme scheme है A, B, A. ते इस तो बाद है what is the poet sorry about? He is sorry that he could not travel on both roads. ते इस तो बाद है what is the symbolic meaning of 2 different paths in the woods? The one path is for the ordinary people. The other less traveled path is for the extraordinary people. This to bada, I am the beam that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that built your boat. I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. Name the poem and the poet. Poem Prayer of the Woods. Poet not known या anonymous. So write the line in the poem that explains that wood accompanies us from birth to death. The wood of your cradle, the shell of your coffin. Wood of the cradle हो गया बच्चे दा पंगूड़ा. ते shell of the coffin जो कि दफनाण दे काम आंदा. ते असी पूरी लाइन लिखनी है. I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. Who is the speaker in the poem? ते इत्थे तुसी the wood या the tree भी लिख सकते हो. What is the prayer of woods to the human beings? The woods pray to human beings not to harm them. This is the central idea on friendship on his blindness. On friendship thus लिख सकते हैं. The poem is written by Khalil Gibran. He tells us about friendship by praising its virtues and advantages. A friend is a God's gift. He stands by us through thick and thin. He can read our thoughts even if we do not express them. Joys become double and sorrows half when shared with a friend. This is on his blindness. The poem is written by John Milton. In the poem, the poet feels restless, who thinks that being blind, he will not be able to make proper use of his talent given to him by God. But soon he realizes that God is very kind to his creatures. God does not want any return for gifts he had given to human beings. God does not want men to work to please him. Those who accept God's will cheerfully are his best servants. Just about the short questions. Why did the narrator render attendance to Hassan every time? Hassan would beg for attendance in such a manner that the narrator could not say no. She did not want that attendance shortage should affect his appearance in final examination. Istobada, how did Philip manage to get a clean dress? His music teacher's wife, Mrs. Hesputa, gave him a white shirt. The shirt was large and she fitted it with the help of pins. Istobada, describe the glow of pleasure that the narrator experienced. The bus conductor behaved in a very courteous manner, even though the narrator had no money to pay for the bus fare. This was a glow of pleasure that the narrator experienced.
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what did the narrator learn at the well house? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। The story of my life chapter ਵਿੱਚੋਂ at the well house as a cool stream of water gushed over the narrator's hand and Sullivan spelled into the other word water. The narrator felt that the mystery of language was revealed to her. This living word awakened her soul, gave it life, hope and joy. Is the how were the convicts punished when they failed to work properly? Gadri Babas in Kalapani jail. If the prisoners failed to extract 30 pounds of coconut oil each and pound coconut husk to produce cord thread, they were made to face filthy abuse and were given up to 30 whiplashes. Is the answer any two? How was Rukin's bleeding finger a flag of victory? Rukin's bleeding finger was a flag of victory because he hoped to get some damages through the police. What was the customer's complaint regarding the frame? The gold frame chapter which the customer complained that Datta had given him a square frame instead of the cut mount with an oval shape. Why did the narrator consider Chandu the embodiment of perfection for him? The barbers trade union ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, he considered Chandu the embodiment of perfection because he could make and fly paper kites of complicated designs which the narrator could not do. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ long questions. Character sketch of Hassan. Hassan was a college student. He was a bright student but was very irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hardworking students and called them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ write the theme of the story, Two Gentlemen of Verona. This is the answer. The chapter Two Gentlemen of Verona is based on the theme that we should face the misfortune of life boldly. The message is conveyed through the life struggle of two brothers, Nicola and Jacopo. They became homeless and orphans in their childhood and their sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. Yet they were hopeful towards life. They sold fruits and hawked newspapers. They worked hard for the treatment of their sister. The story conveys the message that sacrifice, sincerity and devotion add new dignity to life and give a new hope to humanity. This is about the character sketch of Polly's teacher. Polly's teacher was a kind lady. She was very sympathetic with Polly and showed her great love and affection. When Polly could not tell her name and cried, she spoke to Polly in a very soothing voice and encouraged her to tell her name again. She encouraged Polly to come to school every day. She gave new hope and new life to Polly. She helped Polly to build her self-esteem when Polly refused to marry Pishambar. She supported her decision of remaining single and becoming a teacher in her own school. She is an example of an ideal teacher. This is why Datta found a solution of his problem. Did it really work for him? Justify your answer. This is the answer which ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. The framed photograph of the customer's grandfather was to be delivered in the next 3 days. Datta had ruined it by dropping the paint over it and rubbing it. He decided to replace the photograph with that of a similar looking man. When the customer saw the photograph, he said to Datta, "What have you done?" Datta feared that his trick had been discovered. But the customer said that he asked for a cut mount frame with an oval shape, but it was a square one. He took the frame and went away. So Datta's solution to the problem of the spoiled photograph worked well. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨ।